a plate which gives you a lot of color, it means it is a balanced diet. If body use too much of fat as a source of energy, then आपका automatically weight reduction आना start हो जाता है. Our diet is mostly based on carbohydrate. Sustainability का issue keto diet के साथ थोड़ा रहता है. Hi guys, celebrities और कॉमन मैन सबको फिट और फाइन दिखना है. बस इंटरनेट पर गए, कोई भी फिटनेस डाइट चार्ट उठाया, फॉलो किया, बिना सोचे समझे कि बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी. सो इन सब सवालों के जवाब लेकर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कोमल मलिक, जिनके पास 17 years of experience है. Hi कोमल, welcome to the Health Site podcast. How are you doing? I'm good. Thank you Fauziya for having me here. इतने सारे फिटनेस डाइट्स हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट, वीगन डाइट, प्लांट बेस्ड डाइट, मेडिटेरियन डाइट, मतलब कंफ्यूजन हो जाती है. कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी के हिसाब से कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए? When we talk about कि हमें वजन कम करना है, तो कुछ चीज़ें जो हमारी माइंड में स्ट्रेट अवे आती है कि हमें डाइट फॉलो करना है या हमें फिजिकल रिजीम फॉलो करना है. बट आई कैन से सी वी एनकाउंटर विद लॉट मैनी डाइट्स नाउअडेज. उसमें से जैसे आपने बताया इंटरमिटेंट फास्टिंग, मेडिटेरियन डाइट, प्लांट बेस्ड डाइट और वेगन डाइट. सो इट डिपेंड्स लाइक टू विच हेल्थ कंडीशन यू आर इन एंड आपका एज क्या है. आपको उस सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए डाइट को फॉलो करना चाहिए. और आप अपना टारगेट क्या रखना चाहते हैं, आपको वेट मैनेज करना है, आपको थेरापेटिक मैनेजमेंट करनी है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते ही आपको जो भी डाइट्स हैं वो आपको चूज करना चाहिए. इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करें, सो इंटरमिटेंट फास्टिंग में डिफरेंट मेथड्स हैं, लाइक 12 आवर्स, 16 आवर्स, 20 आवर्स. तो वो किस हिसाब से हमें डिसाइड करना चाहिए? इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली एक टाइम बाउंड फास्टिंग है, जिसमें हमारे पास बहुत डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. कुछ एग्जांपल्स ये हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की कि आप ऑल्टरनेट डे पे फास्ट करते हैं. एक एग्जांपल ये है कि आप 5 days नॉर्मल डाइट फॉलो करते हैं, 2 days का फास्टिंग करते हैं. सो एज द नेम सजेस्ट, यू स्किप अ मील फॉर अ specific period of time. So in this we have a schedule like 18 hours is to 6, and then we have 16 hours. So in this we have time bound. So 8 hours would be like you can eat whatever you want, and the rest of the hours you need to fast yourself. So by but this is a little difficult to follow, which is very commonly we all follow, is a 12-hour fasting. Yeah. So, you take your last meal by around 7 p.m. and then the next meal would be somewhere around 7 a.m. with a little, bed tea and something like that. So, it is something which is a very common with us. But yes, the other diets like 14 hours fasting, and 10 hours you can have your food and everything. So this is pretty easiest. Otherwise your 16 hours or 20 hours, that is a little difficult. So like diet to follow. जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान जब हम खा सकते हैं, सो उसमें भी कोई स्पेसिफिक डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए? Of course, हम उस टाइम पे जंक फूड तो नहीं खाएंगे, प्रोसेस फूड नहीं खाएंगे, but yes, you can have a normal home cooked food which has little more of vegetable. You can consider whole grains, pulses. It should be a healthy diet, but it should not be like that ki you are eating something vaguely, you are eating processed food, you are taking too much of sugar intake in different form or different substitutes. So of course, if we follow intermittent fasting, although it is a time bound diet plan, but you have to follow a certain kind of restrictions. Pros and cons that our viewers have to be keep in mind जब वो follow कर रहे हो ये diet. A lot of studies says that intermittent fasting has a beneficial effects in your diabetes management, weight reduction, because anyhow it is a low calorie diet because it is time bound, so you eat for a particular period of time. So of course it has little low calories, so you can maintain your weight, you can maintain your diabetes level, and the insulin sensitivity, it gets improved
with this intermittent fasting, and we have lot many studies which supports this, where that intermittent fasting is good for health. If we talk about negative about intermittent fasting, then definitely we all know this is a time bound. तो आप उस टाइम पे कम खाते हैं, मतलब you have a specific time when you eat, तो जो बाकी आपका टाइम बचता है जब आप नहीं खा रहे, तो उसमें आपको थोड़ा वीकनेस फील होता है, नॉशिया फील होता है, क्योंकि उस टाइम पे यू आर टोटली ऑन अ फास्ट। काफी लोग कीटो डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन ये कीटो है क्या, ये किसी को पता नहीं है। व्हाट इज कीटो डाइट? बेसिकली कीटो डाइट जो है, एक हम इसे ऑफिशियली मानते हैं कि ये डाइट एक ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता था, जिसमें बच्चे जिनको एपिलेप्सी का इशू रहता था, फिट्स का इशू रहता था, तो ये बेसिक जो डाइट था वो उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता था। एंड दिस इज़ नॉट अ न्यू डाइट, दिस इज़ अ वेरी ओल्ड डाइट, but now this, like lot many studies which says like it can be used as a treatment for your diabetes, and few people are using it for your weight management. It is low in carbohydrate, it has high in fat. The body fat को use करती है एनर्जी के लिए, तो उस सिचुएशन को हम कीटोसिस बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर आप बॉडी में फैट यूज़ हो रहा है एनर्जी पर्पस के लिए, तो आपका वेट रिडक्शन होना स्टार्ट होता है। तो वेट रिडक्शन के साथ बहुत सारी आपकी डिसीजेस भी करेक्ट होना स्टार्ट होती हैं। सो दैट्स व्हाई पीपल आर यूजिंग एज अ मोड फॉर द वेट रिडक्शन एंड डायबिटीज मैनेजमेंट, तो दे आर यूजिंग इट नाउअडेज, बट ऑफिशियली इट इज मेंट फॉर द ट्रीटमेंट। सो कीटो डाइट में क्या खाना है और क्या अवॉइड करना है? अगर आप कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं तो उसमें कुछ आप हेल्दी फैट्स इंक्लूड करें, आप बेकरी या प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं करें, बिकॉज इट हैज़ लॉट ऑफ ट्रांस फैट्स। तो वो ट्रांस फैट आपको डाइट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए एज अ कीटो डाइट, बिकॉज इट विल गिव यू अ बैड इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ, इट विल अफेक्ट योर ट्राइग्लिसराइड्स, लिपिड प्रोफाइल। बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू इंक्लूड गुड फैट इन कीटो डाइट, इट improve all these conditions. So the selection of fat, it does matter in your keto diet. So any side effects or any potential risk of keto diet that viewers should know about it? Potentials, अगर आप keto diet को एक proper way में follow करते हैं, आप good fats include कर रहे हैं, because people does not know because they know they wanted to have more fat in keto diet, but what kind of fats they are taking? Fried foods are not allowed, or too much oily or a bakery foods are not allowed, because it doesn't have a good fat into it. जो vegetarian है, उनके लिए keto diet follow करना थोड़ा सा difficult हो जाता है, although we have lot many sources in vegetarian also, but for a longer period of time, because it has very few carbohydrates, and our diet is mostly based on carbohydrate, and if you devoid totally carbohydrates from your diet for a longer period of time, so sustainability का issue keto diet के साथ थोड़ा रहता है। वीगन ये वर्ड आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है। कौन सी डाइट फॉलो कर रहे हो? वीगन डाइट फॉलो कर रहे हो, लेकिन ये वीगन डाइट है क्या? Vegan diet, as a name suggests, it is a totally vegetarian, a plant-based diet. Okay. It doesn't have any meat and meat products into it. It doesn't contain any dairy, no eggs. So it is a totally plant-based diet. So it includes abundant of फ्रूट्स, वेजिटेबल। खूब उसमें आप जब हम वेगन डाइट की बात करते हैं तो वी शुड हैव लॉट मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जो भी चीज़ें आपको प्लांट से ईजिली यू गेट इट, तो वो वेगन डाइट का पार्ट होता है। तो इधर आप उसमें होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, सोया, नट्स, सो इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी हेल्दी डाइट, एंड इट इज़ इन फैशन नाउअडेज, बिकॉज पीपल आर गेटिंग आउट ऑफ एनिमल फैट नाउ। इस डाइट को फॉलो करने के एनी हेल्थ रिस्क वीगन डाइट के साथ ऑफ कोर्स, अगर आपका नॉन वेज या आप मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हैं, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो कंप्लीटली मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स में आपको चिकन और एग से ही मिलता है, डेयरी से मिलता है, वो इस डाइट में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये डाइट आपका उन बेसिक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में डिप्लीट होता है। सो फॉर दैट मैटर वी रियली नीड टू हैव आउटसाइड सप्लीमेंट्स to complete that, in case if you're getting these kind of deficiencies, जो आप basically fulfill करते हैं नॉन वेज को अपनी डाइट में इंक्लूड करके। बट वीगन के साथ ये है कि आप कुछ नॉन वेज या मीट प्रोडक्ट नहीं खा सकते हैं, तो उन चीज़ों को मीट करने के लिए, उन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को मीट करने के लिए आपको आउटसाइड
आउटसाइड सप्लीमेंट्स यूज करने पड़ते हैं। अब वीगन के साथ ना एक और वर्ड जो है वो काफी सिमिलर आ गया है, प्लांट बेस्ड डाइट। Right. So are they both similar or there is a difference? They are pretty similar because plant-based, again, it is a totally plant-based diet. So all fruits, vegetables, grains, nuts. So they are the part of plant-based diet. Plant-based diet has a beneficial effects for the environment on a bigger sense if we talk about. It improves because there is no meat and meat products. So it helps to improve the soil fertility. It reduces the deforestation and everything. So if we talk about on a bigger sense, the plant-based diet has a beneficial effects for the environment. And of course, because it is based on plant-based, it is rich in micronutrients, lot of vitamins, lot of minerals are available in it. If you have a lot of vitamins and minerals, definitely they act as an antioxidant. They improve your immune system, and lot many diseases which are related to this, like your cancer and all. So now the study says if you take a lot of fruits and vegetables in your diet, you can reduce these kind of disease outbreaks and all. So in that ways, you can say the plant-based has a very benefits for the normal people and everything. So there was news a month ago that there was a Russian influencer named Zahana who reportedly died because she was following raw vegan diet for almost a decade. So जब आप ऐसी कोई डाइट फॉलो करते हैं, कोई डायरेक्शन फॉलो करना चाहिए, कोई ड्यूरेशन फॉलो करना चाहिए so that ऐसी सिचुएशन ना आए. If you follow this kind of diet for a longer period of diet, then definitely in between you have to do your health checkups, or wherever you feel that there is some discrepancies in your biochemical parameters or your blood parameters, do correct it. उसको ठीक करने के लिए we should have some supplements in between, like sometime we need to have vitamin B12 because B12 is present and in non-veg or a meat product, and it is very important for us. So for that matter we need to take it from outside. So हमें अपना हेल्थ चेकअप ऑन अ रेगुलर बेसिस करना चाहिए अगर हम किसी भी तरह का डाइट फॉलो कर रहे हैं, ताकि अगर हमें पता चलता रहे कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी है हमारी न्यूट्रिशनल लेवल में या हमारे बायोकेमिकल लेवल्स में, तो हम उसे फुलफिल कर सकें through supplementation. There's one more diet that people are following and it's Mediterranean diet. Yes. So what is it? You can say it is in fashion again, just like your vegan diet. So Mediterranean diet is all about the abundance of fruits and vegetable, whole cereal. But Mediterranean diet is very useful for the correction of lot many diseases. Okay. So the difference between the other diets and this is like that. So like high cholesterol level or a diabetes management. In fact, for your cognition improvement, we try to follow Mediterranean diet. And the Mediterranean diet, of course, it has a good amount of fruits and vegetable, whole grains and nuts. So this includes all these kind of things in Mediterranean diet. So the name is Mediterranean. Yeah. Is it region specific diet? Not now. Okay. So it is available everywhere now because it is loaded with fruits and vegetable and lot many plant-based things. So it is for everybody and it is present everywhere. So any variations in Mediterranean diet, like for different regions? It depends, the seasonal vegetables availability, fruits availability, cereals availability. So as per the availability of some particular things in a particular region, we can say that any diet, it could be a Mediterranean, it can be very specific for that region. Vegan and Mediterranean diet, इन दोनों में difference क्या है? It has a totally different diet, I can say. Vegan is a complete plant-based diet. There is no dairy, there is no meat products. But in Mediterranean, we have, we include fish, we include dairy also, but yes, to be a little limited amount. We can have chicken, we can have eggs, but yes, the quantity must be in a limit. But it is not like vegan, that is totally a plant-based, but Mediterranean, we include some dairy and non-veg also, not in a very a bigger amount, but yes, in a limited amount. But we don't take red meats in Mediterranean diet, and we should avoid too much of sugar, we should avoid too much of refined cereal, processed food in Mediterranean diet. इतनी सारी डाइट के बारे में हमने बात कर लिया, लेकिन आप कौन सी डाइट फॉलो करती हैं? I follow a diet in between vegan
and Mediterranean. Okay, but yes, somehow in between intermittent fasting, because I try to finish my dinner by 7 p.m. So in between intermittent so fasting. next meal आपकी होती होगी 7 a.m. या 8 a.m. You can say it is more than that. Maybe generally my first meal in a day is by around 9:30 or 10 o'clock. So somehow I follow a little intermittent fasting and in combination with vegan and Mediterranean diet. किसी को कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई डिसीज है, सो कौन सी डाइट है जो वो फॉलो कर सकते हैं और कौन सी डाइट है मतलब या डाइट्स हैं जो फॉलो नहीं करना चाहिए बिल्कुल? कुछ हमारे स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं जहाँ पे हमें डाइट्स फॉलो नहीं करनी चाहिए एज सच. डाइट्स लाइक कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, वेगन आप स्टिल फॉलो कर सकते हैं, मेडिटेरियन आप स्टिल फॉलो कर सकते हैं, बट जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ये कीटो डाइट है, जस्ट लाइक इन प्रेगनेंसी you can't follow these intermittent fasting in keto diet in pregnancy, or you can say in lactation, or in elderly people, or a young generally youth or a young children, because this is a time bound, low in calories. So for these situations or these stages of life where we should not follow intermittent fasting and keto diet. Vegan diet and Mediterranean, I can say it is a kind of balanced diet because it has vegetable, fruit, cereal, pulses. So it is somehow you can, follow in all situation. And, in the treatment of diabetes, in the treatment of, not in the treatment, yes, to reduce the risk, you can say, in diabetes, in cardiovascular diseases, to control the blood pressure, or you can say to correction of hypothyroidism or PCOS. So there are many metabolic disorders where you can follow almost all kind of diets. So, जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो सिर्फ डाइट करते हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो आपको क्या लगता है कि डाइट ही सारा काम कर देगी या वर्कआउट या कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए उसके साथ? A secret or a key for a weight reduction is always a healthy diet and a routine physical regime. So if you don't follow a physical regime, you will not be able to burn out your extra calories. So उस extra calories को या वो extra kilos को शट डाउन करने के लिए, उस कैलोरीज को बर्न आउट करने के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट हैज़ टू गो हैंड टू हैंड. अगर आप खाली डाइट फॉलो कर रहे हैं और एक्सरसाइज फॉलो नहीं कर रहे, या सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं और डाइट में कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रहे, यू आर ईटिंग लाइक एनीथिंग, तो उस सिचुएशन में आई कैन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. तो एक अच्छा रिजल्ट के लिए, एक appropriate BMI तक पहुंचने के लिए आपको एक्सरसाइज एंड डाइट को एक्चुअली में एक साथ यूज करना चाहिए, तभी आप अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे. लोग इन डाइट्स को फॉलो कर रहे हैं, बट वो कहते हैं ना कि कोई स्पाइस खाना छोड़ नहीं सकता, स्पाइसेस, सबको मिर्च मसाला पसंद होता है, बिना उसके नहीं खा सकता. जैसे मैं डाइट फॉलो कर लेती हूँ लेकिन मीठा खाना नहीं छोड़ सकती, कट डाउन कर सकती हूँ बट बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता है. सो इन डाइट्स में क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? स्पाइसेस मीन्स व्हाट? मैं सॉल्ट को स्पाइस में नहीं मानती हूँ. सॉल्ट इज समथिंग विच इट इज एसेंशियल, but you should not take too much of salt in your diet, because salt leads to a water retention and many other issues. So salt has to be minimum, and we really need to avoid table salt, because sometimes it happens like we take salads, we take fruits, and we take many things which we feel इसमें नमक कम है, and ऊपर से हम डाल लेते हैं. तो टेबल सॉल्ट इज नेवर अ गुड ऑप्शन. यू कैन हैव अ नॉर्मल सॉल्ट इनटेक विच इज प्रॉपरली कुक्ड इन अ फूड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. एंड इन जनरली पीपल डोंट टेक टू मच ऑफ सॉल्ट इन देयर डाइट. तो सॉल्ट अगर आप फूड में प्रॉपरली कुक कर रहे हैं और उसे रॉ सॉल्ट नहीं यूज़ कर रहे, इट इज़ ओके. बट अदर स्पाइसेस की बात करें, रेड चिलीज, हल्दी, कोरिएंडर, asafoetida. So these kind of spices, or I can say condiments, they have many health benefits. So they are not bad for the health. So they have many health benefits. So we should include spices.
बट येस देर आर सम फ्यू फूड आइटम्स जब हम कुक करते हैं तो उसमें हम ओवरली स्पाइसेस और मसाला बनाने के चक्कर में हम काफ़ी सारा फैट यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि आप कम ऑयल में एक अच्छा मसाला तैयार नहीं कर पाते हैं खाने के लिए। तो आपको ऑयल को रिस्ट्रिक्ट करना है। स्पाइसेस कॉन्डिमेंट्स आप अपने कंटिन्यू कर सकते हैं किसी भी तरह की डाइट में। अब हम कहते हैं आप अगर रॉ सैलेड नहीं खाया जा रहा है इन केस, तो थोड़ा सा उसे आप उसे सॉटे कर लें, आप उसमें चिली फ्लेक्स और मल्टीपल आप सीजनिंग्स डाल सकते हैं, हर्ब्स डाल सकते हैं टू मेक इट मोर टेस्टी। तो इट डजंट मीन कि आपका जो डाइट फूड है इट शुड बी अ ब्लैंड। You can make it tasty with adding, a good amount of spices and condiments. हाँ, जैसे कि आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा दैट वाइट ब्रेड नहीं खाना है अगर डाइट फॉलो कर रहे हो, ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड खाओ। सिमिलरली वाइट राइस नहीं, ब्राउन राइस खाओ। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है या दीज आर ऑल जस्ट मिथ्स? देखिए टोटली दे आर नॉट, ऐसा नहीं है कि मिथ्स हैं, बट इफ यू गेट अ गुड मल्टीग्रेन ब्रेड फ्रॉम अ गुड शॉप विच गिव्स यू अ प्रॉपर label over it, that it has this much of millets and this much of important carbohydrate, you can say a complex carbohydrate. So if a label said कि this has this much millets, which is a high fiber thing, it is not bad for the health, then you can have it into your diet. But अगर आप white breads ले रहे हैं और for instance अगर आप brown bread भी ले रहे हैं, they are totally a maida bread. So instead, going for a brown bread or a white bread, multigrain bread at least we can include in case if the label is appropriate and it gives you a proper information about it. And then as per you, white rice or brown rice. So the difference is that only it has little more fiber. Brown rice, it has little more minerals as compared to your white rice, just like in your white sugar and brown sugar. So white sugar is a properly refined one. It just gives you extra calories. But brown sugar or a shakkar or you can say gur, it has a little bit more into a mineral अब लोगों side. के साथ एक और नया चीज भी तो आ गया ना, व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर, नो जस्ट शुगर फ्री दे दो। Sugar free again, a lot of debate is going on by WHO and all कि sugar supplements are not good for the health. So now we are finding another options for the replacement of your white sugar. But yes, lot many organic sugars are available, sugar supplements are available. We can take that sugar supplement in your diet, but that to be in a limited amount. So before we end, Yeah. tips for healthy balanced diet. See, our balanced diet means that you should have carbohydrate into it, that the diet should be rich in protein, it should be rich in fiber, it has some fat also, a lot of vitamin and mineral rich vegetables and fruits. So a plate which gives you a lot of color, it means it is a balanced diet. So when we talk about carbohydrate, again, a very easy language, carbohydrates divides into two, complex and simple carbohydrates. So we try to have more of complex carbohydrate in diet because it is rich in fiber and fiber gives us a feeling of fullness. So हम थोड़ा सा फाइबर खाते हैं, हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो हमें कवरेज देता है काफ़ी लंबे समय के लिए, हमें बार बार भूख नहीं लगता है। तो आई प्रेफर दैट द बैलेंस डाइट शुड हैव अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. इट हैज़ अ कॉम्बिनेशन विद लेग्यूम्स जैसे दालें हो गई, साबुत छिलका दाल, अगेन because it is rich in a lot of minerals, it is rich in protein, it has fiber, so it gives you almost all kind of essential nutrients, be it macronutrients and micronutrients. Then we'll talk about healthy fats. So the vegetable fats, it is good. You can include avocado oil, extra virgin oil, you can use nut oil for your preparations. So this kind of healthy diet, you can include nuts and seeds in your diet. So this kind of healthy diet you can use in your regular meals so that it will give you a balanced nutrients. Thank you, Komal. It was really nice chatting with you. Thank you so much. So that's all, guys. We are signing off from the Health Site podcast. I hope all your questions have been answered. If not, send them in the comments section. We will make sure to answer them in the next episode. Stay fit and stay healthy.